StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। अगर आज की एपिसोड की बात करें तो पेपर 1 चैप्टर नंबर 5 स्ट्रैटिफिकेशन, टॉपिक है एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन एंड द एपिसोड इज 41। इस पूरे के पूरे नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स विल लुक इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? सोशल एक्सक्लूजन लार्जली रेफर्स टू a process where the people certain people are excluded from the participation in the larger societies despite adhering to all the norms and values of the society। कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी की सारी वैल्यूज को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सोसाइटी में एक इक्वल पार्टिसिपेशन से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है just because they may belong to certain communities, certain categories, certain religion, certain race, or certain language, or maybe certain other aspects which are different or contradictory to the larger value systems of that particular society। तो for example, एक अगर क्रिमिनल है, क्रिमिनल को जब सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो दैट इज नॉट अ सोशल एक्सक्लूजन। दिस पर्सन कैन नॉट ब्लेम द सोसाइटी फॉर इट्स सोशल एक्सक्लूजन्स बिकॉज ही हैज बीन एक्सक्लूडेड बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। बट फॉर एग्जाम्पल, मे बी अ पर्टिकुलर ब्लैक, many times he may largely follow all the norms and values, he may be purely conformist but still may not be allowed to participate at an equal level with the other people, then that would be definitely termed as social exclusions। तो मेक श्योर हर एक्सक्लूजन सोशल एक्सक्लूजन नहीं होता है। कुछ कोविड के टाइम में भी एक्सक्लूड हुए थे फॉर आइसोलेशन, वो सोशल एक्सक्लूजन नहीं था, दैट वाज लार्जली बिकॉज इन ऑर्डर टू लार्जली रेस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड। तो जब आप प्रॉपर तरीके से सोसाइटी की वैल्यूज फॉलो करो और फिर भी आपको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो, वो होता है सोशल एक्सक्लूजन। हमेशा याद रखना इस चीज को, ऑफन कंफ्यूजन्स आते हैं। A small amount of information, batch 2 of our sociology is starting from 9th of May, जहां पे पूरी सोशियोलॉजी में होलिस्टिकली करूंगा। एवरी डे फॉर मी लार्जली टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन लुक्स बिट ऑड, बट एट द एंड this is for those people who join us, who have started watching this series. So we are starting our batch 2. It's a good opportunities to get into these classes and finish your sociology by at the best August or September। फिनिश व्हेन आई से क्वालिटेटिवली, बिकॉज मैं क्वांटिटेटिव पे अगर आपको फिनिश करना है तो आई थिंक देयर आर बेटर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यू कैन जॉइन। अगर आपको सीरियसली क्वालिटेटिवली सोशियोलॉजी 5 महीने लगा के शिद्दत से मेहनत करके खत्म करनी है, ओनली देन दिस कोर्स इज मेंट फॉर यू, और एल्स you can see these lectures, get the informations, and you can join somebody else। Yes, I'm being very frank because we only, at least clearly I'm focusing here on quality, so that after 5 months you should be in a position to compete with the top of the toppers as far as UPSC is concerned। Social exclusion के types क्या है? There are 2 broad categories of social exclusion। One is the voluntary social exclusions where society is not going to exclude you, rather than you yourself largely exclude yourself। अब ये देखने में लगेगा वॉलंटरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सन्स है एंड दे स्टार्ट लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, काफी रिच है लेकिन एक पर्टिकुलर घीटों में रहने लगते हैं। अब देखने में लगेगा ये वॉलंटरी लार्जर सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वॉलंटरी एक्सक्लूजन है। बट इस वॉलंटरी एक्सक्लूजन के पीछे भी कई बार कुछ फॉर्म्स ऑफ वॉलंटरी एक्सक्लूजन रियलिटी में एक इनवॉलंटरी होते हैं। एक ट्रू फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एक्सक्लूजन क्या है? आपको मैंने आर.के. मर्टन बताया था। आर.के. मर्टन के अंदर हम देखते हैं रिट्रीटिस्ट who rejects the norms of society, goals of society and the means of society, और वो रिट्रीट कर जाते हैं। जैसे साधु संत महात्मा हिपीज, those people are excluding themselves voluntary from societies। वो त्याग देते हैं सोसाइटी को और वो वॉलंटरी है। बट इस तरीके के एक्सक्लूजन जो दिखाई देते हैं, इनके पीछे हिडन होता है इनवॉलंटरी, बिकॉज दीज पीपल आर स्टेइंग इन अ ghetto as they largely feel more safe, as there is a fear psychosis is present among certain religious communities which may force them to live in a particular ghetto, which may look that these people are taking a choice
making a choice and choosing their own decisions, but in reality there are other forms of discriminations resulting into voluntary social exclusions. इनवॉलंटरी सोशल एक्सक्लूशंस आर जहां पे लोग अपने पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सोसाइटी के हर नियम कानून कायदे मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कॉल्ड एज इनवॉलंटरी सोशल एक्सक्लूशंस. फॉर एग्जांपल, the women's in any society for that matters many times becomes the victims of involuntary social exclusions, as the women's largely, despite equally contributing to the economy, to the family, they are still always subordinated and exploited, and to a greater extent humiliated as a considered as a secondary citizens in India. अब अगर हम डायमेंशंस देखें सोशल एक्सक्लूजन के, सम पीपल मे लार्जली बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम all the spheres of society, but however there are certain specific sectoral social exclusions which takes place. कुछ लोग सिर्फ राइट से एक्सक्लूड हो जाते हैं, वुमेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल. कुछ लोग मार्केट से एक्सक्लूड हो जाते हैं, कुड बी ए लोअर कास्ट, कुड बी द पीपल हु आर लार्जली फेसिंग पॉवर्टी. कुछ लोग पावर से एक्सक्लूड हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस एस्पेक्ट्स. और कुछ लोग सोशल हेमिस्फीयर से एक्सक्लूड हो जाते हैं, मे बी हियर द people belonging to a particular minorities on the basis of linguistic, on the basis of son of soil policies and others. So social exclusions largely can be of a complete exclusions, or it can largely be exclusion only in certain spheres, may not be excluded in other spheres. For example, के हाई क्लास वुमेन्स ले तो शायद कुछ राइट से एक्सक्लूडेड है, बट कहीं ना कहीं ये सारी एस्पेक्ट्स के अंदर शी मे नॉट फेस द एक्सक्लूशंस एज फेस्ड बाय द अदर वुमेन्स. सोर्स क्या होते हैं सोशल एक्सक्लूशंस के? द सोर्सेज ऑफ सोशल एक्सक्लूशंस हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड सिंस ट्रेडिशनल टाइम्स, बट हाउएवर द सोर्सेज अपॉन व्हिच द एक्सक्लूशंस आर प्रैक्टिस्ड वेरीज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटीज. ट्रेडिशनल सोसाइटी में नॉर्मली एस्क्राइब्ड सोर्सेज होते थे. अब जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, एक्सेट्रा. Modern societies may, beside the ascribed social exclusions, there are also exclusions present on the basis of technology, digital divide, on the basis of sexual preferences, same-sex marriages, on the basis of diseases, HIV, leprosy, etc. There are many forms of social exclusions on the basis of consumption patterns or lifestyles, on the basis of education, on the basis of laws. There are multiple forms which may largely lead to social exclusions. Many subtle forms of social exclusions exist. For example, those newly rich people who are not having the right etiquettes, the table manners, or the lifestyles which is employed by the rich. Many times those Novax rich are excluded from the societies of rich. Not having the right clothes, attires, or maybe the English communication skills can be considered as one important aspects upon which many Indians face social exclusions. Not only the society beyond the country, but also within India, we often face such forms of exclusions. Therefore, there are multiple factors which can largely become the breeding ground of social exclusions. It could radiate from government policies and mechanisms, and at the same time, it can also radiate from the traditional ethos and identities. If this is the way you want to understand the sociological concepts, जो छोटे छोटे बारीकी वाली चीजें हैं, aspects को, तो our batch 2 of sociology, as I gave you the information, is starting from 9th of May. This is the place where you seriously should be in if you are ever serious about your sociological understandings. ये मेरा वादा है, मैं सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, हर चीज की एप्लीकेशन. क्यों? बिकॉज ये सारी चीजें जब हमने देखी, इनके अंदर डिटेल्ड चीजें होती है. बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, देयर आर aspects, there are connections which are made here. Imagine tomorrow if a question comes on, discuss the factors or the sources which have largely led to the social exclusions of lower caste in modern society, or for that matter dynamics. The social exclusions have remained a social fact of society, but however the basis of social exclusions have changed drastically when compared to traditional society. Elaborate. ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एक एप्लीकेशन लेवल तक लेके जाना पड़ता है क्वेश्चन, एंड आवर प्राइम फोकस एज फार एज आवर बैचेस ऑन दोस एस्पेक्ट्स जहां पे आपको एक आपसे कनेक्ट करके सोशियोलॉजी पढ़ाई जाए. एंड रियली दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम promising here. This is something we actually do because I seriously believe in
under promise, over perform. So if you are interested to learn this sociology in this manner, this is the batch you should definitely not even think twice for this. And still, if you remain dissatisfied, I'll personally give you your entire fees back. If not, Study IQ Devaka Bothra would refund the fees. That's my assurance to you and this public forum. Thank you so much. Use the code DIVLIVE. Have a nice day. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।